Well, it's an absolute pleasure to have your company back with us here on Advantage Developers Presents Game on Hair, unpacking all of the action we've just seen in the Group D clash all the way over in St Vincent and the Grenadines. Of course, the ICC Men's T20 World Cup today, it was between Bangladesh taking on the Netherlands in a Group D clash that had oh so much context into deciding who might be that second lucky team that, of course, qualifies in the Super 8. So you already know that South Africa has gone through in their group, but the Netherlands and Bangladesh had both points on the board, both wanted to win the match. It was a really measured approach by Bangladesh, though. They elected to bowl first, I was sent in to bat first, I should say, and in the end they managed to get the runs done with some wonderful clinical bowling efforts by their team, led by Mustafizur Rahman up the front. In the end, the poor Netherlands, they couldn't get the job done, and it was a really emphatic 25-run win to Bangladesh to keep their hope of a Super 8 alive in this edition of the T20 World Cup. Time to welcome back in my wonderful co-host Rohad Nadeem, as well as our wonderful expert panel to chit-chat about all the action we've just seen all the way over in the West Indies. So let's say hello back to Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammed Hafiz. And Guffy, I mean, Netherlands had their chances today, which I think they'll be ruining. But after losing 3 for 6 in that run chase, Bangladesh just were all over them. Yeah, they certainly were. They were in actually a great spot to take the game really deep and win it. And that you see there was a 26 off 13, 33 off 22 and a 25 off 23. Those guys would be a little bit unhappy with themselves that they didn't push on to get a big score to see their team across the line. Just as we saw Shakib do for Bangladesh in the first innings there, you know, with a 64 not out of 46. So I think that's where they went wrong, is just that little period of, I don't know, it was only about 8 balls, I think, in the middle there where they lost those 3 wickets. And that can change a game pretty quickly, and that's exactly what happened here. You know, as I said, they were in a great spot. They were sitting, you know, looking pretty good at 111, you know, for 3, and with the game within their grasp, and they really let it slip. Yeah, they'll be disappointed with ruining what could have been, because it really was a group, Roha, which was wide open by the fact that we've seen Sri Lanka inevitably kind of out of it, particularly with that washout in their last match. But the Dutch, we know that they can be a bit of a bogey side. They can cause a couple of upsets, but it wasn't meant to be today. And credit to the way Bangladesh played in this all-important game for them, as well as their captain was also talking about at the end of the match. It was all about keeping calm in that pressure, under those circumstances. And in that context, when, of course, you know, South Africa have already qualified, now all eyes are on Bangladesh. And today, once again, their batters showed, their bowlers showed why they have been so good in T20 cricket. They have been qualifying, of course, you know, for all these big tournaments, because they have been playing Test cricket for decades. So it's not even a matter of if they're good, it's just a matter of them coming through in these big tournaments. And you know, as we were talking about in that pre-show as well, कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, बांग्लादेश ने सारे T20 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, बट एक बार भी वो सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं खेल सके. अब उनके पास एक मौका है, और उन्होंने बहुत अच्छे से आज का मैच यूज़ किया. उनके प्लेयर्स काम नज़र आए, जैसे एरन ने भी अभी कहा, एक मेजर्ड अप्रोच की तरह नज़र आए और एग्जीक्यूट करके आए जो भी प्लानिंग उनकी हुई हुई थी. बिकॉज सामने वाली टीम जो नेदरलैंड्स है, वो भी कोई ऐसी टीम नहीं है कि वो कोई सरप्राइजेस ना स्प्रिंग अप कर सके. उनके प्लेयर्स भी काफ़ी सीजनड है. बट टॉकिंग अबाउट runs on the board first, Yunus, 159 they were able to put up in their 20 overs with 5 wickets in hand still. और तंजीद हसन ने जैसे एज एन ओपनर किया. हाउ विल यू रेट दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स इस ग्राउंड पे ये एक कंपैरेटिव टोटल था. बिल्कुल मेरे ख्याल से जिस तरह वो पहले यहाँ यूएस से गए हैं और उनके टफ मैचेस हुए हैं, और वो एक आधा मैच बहुत ज़्यादा क्लोज जीते हैं, इसी तरह वो उनको फ़ायदा हुआ. और आज जिस तरह उनके पास हम बात करें प्रेशर नहीं था, तो मेरे ख्याल से अगर वो टॉस जीतते, अगर वो बॉलिंग करते और बाद में चेस करते, तो शायद वो उन पर वो प्रेशर नज़र आता. और वो जो एक बाजू का तो चेजिंग का एक प्रेशर होता है, तो वो उन पर नहीं था. ठीक है, उनके लिए बहुत इजी था. और अच्छी बात ये थी कि जो मैं सिर्फ यहाँ पे शाकिब अल हसन की बात नहीं करूँगा, जितने भी उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, तो किसी ना कोई एक प्लेयर, 2 प्लेयर जो होते हैं वो बॉलिंग में और बैटिंग में, वो जब खड़े होते हैं और उनके इर्द गिर्द वो खेलते हैं. जैसे शाकिब अल हसन की मैं बात करूँ, तंजीम के साथ उनकी 48 रन की पार्टनरशिप, फिर महमूदुल्लाह के साथ उनकी 41 रन की पार्टनरशिप, और फिर आखिर में जैसे जाकिर अली के साथ उनकी 29 रन की पार्टनरशिप हुई. तो हम यही बात कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप चेस कर रहे हो, कोई एक बैटर आपके
वो आखिर तक खेलेंगे, तब कि जाके आपके रन हो जाएंगे। और हमें पता है कि ये वो T20 के मैचेस नहीं हो रहे जहाँ पे 200 रन करने हैं आपने। हमने देखा आज पिच बहुत अच्छी थी, बॉलिंग के लिए भी अच्छी थी, बैटिंग के लिए भी अच्छी थी, लेकिन वो जो कैप्टनसी हुई, जिस तरह टीम बांग्लादेश के कैप्टन ने कैप्टनसी की, बड़े अच्छा उन्होंने जब जहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत थी उनको स्पिनर यूज़ किया, और जहाँ पे बॉलर जब फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत आई तो उनको वैसे यूटिलाइज़ किया। और देखो यही बात है कि जब आपके पास रन ऑन द बोर्ड होते हैं अराउंड 150 160 इस कंडीशन में, क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में अभी तक 200 सवा 200 रन हुए होते तो शायद ये कम लग रहे होते, लेकिन क्योंकि जिस तरह की जो मैचेस भी हो रहे हैं, चाहे आप पोस्ट कर रहे हो चाहे आप चेस कर रहे हो, तो इतने ज़्यादा सिवाय एक आधा मैच के रन नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से वो उनका जो राइट कॉम्बिनेशन था वो उन्होंने आज सेट किया, और उनको समझ में आ गई कि अब उनको कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है। तो बस वो एग्जैक्टली यही है, जब आपके सीनियर परफॉर्म करते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके जूनियर परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए विन करना आसान हो जाता है। राइट, अनदर लकी डिसीजन फॉर देम टू बी पुट टू बैट फर्स्ट। बांग्लादेश के लिए आपने भी प्री मैच में यही कहा था कि इफ यू वुड विन द टॉस, आप भी पहले बैट करेंगे। वंस अगेन रन्स ऑन द बोर्ड and then the bowlers coming into action. देखिए बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा डिस्प्ले है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेशी फ़ैन ये वाली परफॉर्म से देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे से अंडर परफॉर्म करते रहे ICC इवेंट में, और जिस तरीके से इस इवेंट में वो आ रहे हैं, एक उनकी टीम नज़र आ रही है। गो के स्टार्ट उनका अच्छा नहीं था, US से वो सीरीज़ हारे, मोरल डाउन था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दी, हार गए, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि ये वो स्टार्ट होता है जब आपकी टीम एज ए टीम बिलीव करना शुरू कर देती है। तो इन्होंने उस जोन में आए हैं और आज की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका जो डिसीजन होता है ना, वो टॉस जीत के बॉलिंग और बैटिंग फर्स्ट करने की रीज़न होती है। वो रीज़न ही होती है कि कौन सा बैटिंग फर्स्ट करके या बॉलिंग फर्स्ट करके आप अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल चांस देते हैं टू विन द गेम, कि जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा है जीतने के। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे पहले 3 ओवर का अगर फ़र्ज़ करें मुश्किल हालात हैं या 6 ओवर के मुश्किल हालात हैं, वो पहले 6 ओवर के मुश्किल हालात बर्दाश्त करना ठीक है, ना कि चेस करते वक्त 120 बॉल या 20 ओवर पूरे फेस करना आपके ऊपर प्रेशर है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क और जोन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप एक इनिशियल मुश्किल पीरियड अपने अगर बर्दाश्त कर लें तो आपको बाद में कंफर्ट मिलता है, या बाद में आप जीतने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। तो ये उन्होंने किया। अगर आप देखें तो उन्होंने मुश्किल जो शायद नीदरलैंड के लिए मुश्किल था, उनको ये लगा कि उनको यहाँ पे उनकी बॉलिंग एक्सपोज कर देगी उनकी टेक्निक को, लेकिन जो रिप्लाई दिया उनके बैट्समैनों ने, जिस तरह तंजीद ने ऊपर से अटैक किया, फिर आउट होने के बाद जैसे शाकिब ने आके अटैक किया, आते ही उन्होंने अपने शॉट्स खेलना शुरू किए। तो देखें शाकिब इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, उनके टेरिफिक किस्म की जो परफॉर्मेंस है ना वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम। आप देखें कि वो जैसा प्लेयर जब स्कोर करेगा तो मैच जीतेंगे। मैच विनर, देखिए मैच विनर कौन होता है? जो उस इम्पैक्ट से स्कोर करे जहां से टीम जीत जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप शाकिब की परफॉर्मेंस देखें, तंजीद की परफॉर्मेंस देखें, तो वो इम्पैक्टफुल थे। उन्होंने वो जोन ले लिया एज ए टीम। 160 वाज इनफ गुड टोटल, जहां पे वो उनकी बॉलिंग, क्योंकि उनके बॉलिंग के पास फास्ट बॉलिंग भी थी, स्पिन बॉलिंग भी थी, और जो सबसे अच्छी एडिशन इसमें नज़र आ रही है विकेट टेकिंग लेग स्पिनर। तो जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो, तो अगर आपने रन ऑन द बोर्ड लगा दिए हैं 160, जो कि इस पिच के ऊपर एक पार रन को टच कर रहा था, तो देन यू ऑलवेज हैव अ बेटर चांस टू विन द गेम। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश सो फार प्लेइंग वेरी प्रोफेशनली, और जिस तरह वो ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कंडीशन उनको सूट करती हैं। सिर्फ उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो उनकी बैटिंग है। जब उनकी बैटिंग पार रन को टच करेगी, they always will challenge the opposition. Yeah, they absolutely were on song with the bat as well from ball one today. As we take a little look at the match summary, 159 is what they managed with the bat for 5 when they were sent in by the Netherlands after they won the toss and elected to bowl first. And Shakib Ul Hassan, player of the match performance, 64 red ink for him. He carried his bat throughout. His experience was so important in that total to make sure that they got to that pass score on the wicket. It has to be said, we haven't seen international cricket here for 10 years, so it was wonderful to see us back in Vincent and the Grenadines. But, you know, wonderful conditions there today. Rain did spoil the party, it has to be said as well. We did start a little bit late for this match, but a full 20 over a side game was contested. And other than Shakib, Tanzid 35 of 26 and Mamadou, the experience, locking down the bulk of those runs for the Bangladeshis. Well bowled in definite parts by the Netherlands. Van Meekeren was fantastic, 2 for 15 off his 4.
Arian as well, 2 for 17, very important wickets. And Pringle, 1 for 26 of his 3. But in reply, it was a commanding victory in the end. It was hotly contested, that match, for the first 15 overs of the chase, but then the Bangladeshis broke away. They managed to restrict the Netherlands to 134 for 8. Engelbrecht, the captain, led from the front, 33 of 22. Vikram chipped in 26 of 16, but look at that bowling. Rashad Hossain, 3 for 33. What a bounce back after being so expensive in his first over. He got himself 3 very important wickets, and Taskin, who's been beautiful up front with the new ball, did the damage once again, 2 for 30. And then Mamadullah gets an over, 1 for 6 from the ever so experienced all-rounder as well. But Mustafizar, that 1 for 12 was truly a match-winning innings that we'll be deep diving a little bit later, but 1 for 12 or 4 gave Bangladesh a win by 25 runs. And most importantly, Roha, as we take a little look at what that does to our pool here, with the top 2 teams, of course, progressing through to that Super 8, Bangladesh are now in prime position to snare that second spot. We know that South Africa have already qualified, nice yellow Q sitting next to their name, sitting pretty at the top of that table, but it's all for Bangladesh to lose now in terms of who makes it through in that group as well, that all-important Group D, which coming into this tournament, Roha, was one of the ones that were very hotly contested. Let's not forget, 3 big sides in that. We have Bangladesh, Sri Lanka and South Africa, with the likes of the Netherlands, who can upset any team on any day. It was a tight pool, but I think Bangladesh, with this big win today, have just stretched away from the group. Just one step closer to those Super 8s, Bangladesh. They looked really spirited in this win. Of course, they were careful, they were measured, they weren't taking too many risks. But Shakib Al Hasan, what a match winner he has always been for Bangladesh in this format and across formats actually, you know, a number of records to his name. Once again, he showed up with his experience, seniority, and of course taking that charge. And he said in the post-match as well that it was a little bit difficult to bat in those first few overs, but then once that phase was over, it was easy, and it was a challenging score. He said it wasn't a winning total, but it was something that their bowlers could bowl at. Yeah, it definitely was. And, you know, Shakib is, you know, probably the greatest cricketer that Bangladesh has ever produced. So, you know, he's played for such a long time now. He brings so much experience. And he just played some really nice cricket shots. You know, he hit 9 4s and no 6s in his innings. And just used his timing and his placement to absolute perfection. And, you know, we see there through cover, up and over point. You know, it was just really harsh on anything that was a bit wide of him, and just threw his hands through it and picked the gaps beautifully. Little top edge there to, you know, help things along as well. But he just played calculated cricket shots. You know, he didn't try anything too fancy, and he got himself off to a pretty quick start with some maybe a little bit wayward bowling with the width that they were giving him. And you know, he's picking gaps beautifully here. Great effort on the boundary there, used his feet to perfection and just did it really well. I mean, I feel like he could have maybe pushed a little bit harder towards from this point here. You know, 3 overs to go with 6 wickets in hand. Just felt to me like he was just pushing ones to get to his 50 and wasn't trying to up the score a bit more, leaving that to the other batter at the other end. But I just feel like he could have pushed a little bit earlier with what was happening and the position that they were in. But at the end of the day, they got a winning score on the board. And good to see the neck is all right. I mean, he was practicing with that neck brace as we saw in those, you know, just before the game started. But lucky for Bangladesh, he was just practicing something. But what was he practicing? You know, all the batters need to practice that. No, he's a match winner, everybody knows, you know, or he's a senior guy, and sometimes it's happen, you know. Sometimes these kind of things happen. No, but how does that help when he's putting on that neck brace and you know, in the nets? I'm wondering if he's trying to keep his head a bit still, if he feels like he's kind of wobbling around. Sometimes it's cramp, sometimes it's... Sometimes it's acting. मेरे ख्याल से देखिए बाज़ होता है क्या है कि as a senior player आपसे डिमांड करते हैं if you're not fully fit, sometimes team needs, you know, you can come up and play for your country, play for your team, especially when team needs things from you. So I think ये होता है बाज़ लेकिन ये है कि ठीक है वो fully fit नहीं थे. हमें एक न्यूज़ आई और ये बहुत बैड न्यूज़ होती है अगर वो आज नहीं खेलते, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मैच था. अगर देखें, अगर हम इस मैच की बात करें तो शाकिब अल हसन की परफॉर्मेंस देख लें, महमूदुल्लाह की परफॉर्मेंस देख लें. महमूदुल्लाह की तरफ से अच्छी बात है कि उन्होंने एक आउट किया, उसके बाद वो जो है आप जो 41 रन्स की पार्टनरशिप, वो अनलकी रहे कि फिर आज एक ऐसा शॉट खेला उन्होंने जो कि ऑलमोस्ट 6 ही था, लेकिन वो आउट हो गया. अगर हो सकता है अगर महमूदुल्लाह कैरी ऑन करते फॉर नेक्स्ट 2-3 मोर आवर्स, दे विल बी ईजिली समथिंग पोस्ट 180.
और यही होता है फिर जब जैसे वो बॉलर्स आए बॉलिंग करने आए। लेकिन मैं अच्छी बात ये बताऊंगा कि नजमुल हसन शंटू की जो आज कैप्टनसी थी ना, वो अमेजिंग थी। वो इसलिए कि देखा जब एक लेग स्पिनर आए और जिस वक्त उनके बैटर खेल रहे थे और उनके खिलाफ वो 1-2 छक्के मारे उन्होंने, मैं बात कर रहा हूँ विक्रमजीत सिंह की, उन्होंने आके 1-2 उन्होंने बिग शॉट्स खेली, लेकिन सडनली उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली महमूदुल्लाह को 1 ओवर दिया और उसने उसको आउट किया। तो मेरे ख्याल से देखें ये एक अच्छे साइन है। और फिर जिस तरह हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे, फिर तस्किन की बात करेंगे, हमने पहले भी मैच से पहले भी हमने बात की थी कि वो कितना क्रूशल है। तो मेरे ख्याल से उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो सब ने चिप इन किया, और ख़ासतौर पर जब लेग स्पिनर्स मेक गेम्स फॉर यू एंड विन्स गेम फॉर यू, तो वो एक जो होता है बीच में, तो जैसे उन्होंने आया 2 के उनको पहले ओवर में रन हुए 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो दोबारा उनको यूटिलाइज हुआ, तो ये एक अच्छे टीम के साइन है। और फील्ड में एनर्जी थी उनके पास, दे वर देयर फॉर विन, सो दैट इज द it was a commendable combined जी, ऐसा ही है, effort बिल्कुल। from their bowling, like we saw this morning from West Indies, and of course now we saw Bangladesh, and the captain, as Yunus said, he was using his resources just perfectly in this मैं सिर्फ match. एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, जैसे यूनुस भाई ने बात की कि स्पिनर्स विन यू द गेम्स, आप मेक अ गेम फॉर यू। आप देखें कि बड़ा राइटली बांग्लादेश की मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर, एज ए स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ऐड किया गया। कहाँ खेल रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में, जहाँ पे आपको मोस्ट स्पिनर्स की परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है या इसके अंदर कहीं पे भी एक सक्सेसफुल रन लेना है, तो यू वांट योर स्पिनर टू परफॉर्म वेल। उन्होंने क्या किया है बांग्लादेश ने, उन्होंने अपने एक रिसोर्सेज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मुश्ताक अहमद को एज ए लेग स्पिनर कंसल्टेंट के तौर पर ऐड किया। ग्रेट स्पिनर अपना वो इनपुट देते होंगे और उसका फ़ायदा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि एशिया कप के अंदर हमने देखा कि हमारे स्पिन बॉलिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी। वर्ल्ड कप के अंदर आपकी स्पिन बॉलिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी। दोनों कंडीशन कहाँ की थी? श्रीलंका और इंडिया, जहाँ पे स्पिनर का रोल था। अब फिर आप जा रहे हैं कहाँ पे? मोस्ट फ्रेंडली स्पिन बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, जो कि वेस्ट इंडीज़ है। वहाँ पे भी आप अपना एक सैयद अजमल को पहले इन्होंने टीम के साथ रखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, लेकिन इस टूर के ऊपर फिर वो नहीं है। तो ये देखें, आप राइट वे में मैनेजमेंट को इंगेज करते हैं कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तो बांग्लादेश को मैं समझता हूँ उनकी मैनेजमेंट ने राइट डिसीजन लिया, एक अच्छी इंडक्शन की अपनी मैनेजमेंट के अंदर, एक यूज़फुल बंदा जो क्रिकेट की राइट अंडरस्टैंडिंग स्पिनर को समझा सकता है उसको इंगेज किया, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके सामने। Right. Yep. Lots of food for thought there, as always, Professor. Let's just relive a little bit more of this Bangladesh win, though, because the experience of the likes of Mamadullah, Shakib Al Hassan, the Mustafizur Rahman as well was fantastic. But in fantastic news for Bangladesh cricket moving forward, as well as a certain opener, young 23-year-old in Tanzid Hassan was brilliant up the top of the order. Marty, I'm going to come to you as an opener in white ball. I just want to chat to you about this innings of his of 35 of 26 when he was losing wickets around him as well. They were under a little bit of pressure early on as the ball was doing a bit. What was so impressive about his 35 of 26 for you, and how measured the young man was in amongst all of the chaos? Yeah, he was composed, wasn't he? And he picked the right ball to go and hit them beautifully. I mean, 5 fours and a 6 in his 35, and you know, striking 134 was really well done. You know, picked up on anything that was just a fraction short and a bit straight, lifting up over fine leg, and you know the key thing to that was his head position. He got his head 4 into or the 6. ball. That one it looked pretty close. But it was contentious, wasn't it? But then just used his power and his strength to hit square and pick up on anything that was just slightly short, and he was very quick to go press forward and go back onto his back foot, and you know that's a great shot through mid off there, using his feet, being in the right position to hit the ball, and then helping it on its way there. Fielder possibly could have done maybe a bit better there for the Netherlands, but that's cricket, that's the way things go. But no, I thought he played really, really well. A really important partnership with Shakib to get things back on track of 48 to get them to 71 for 3 in 8.3 overs. It was a really key time, and he'll be disappointed that he got out at the time that he did, because you know that partnership, if that had developed into a 70 or an 80 run partnership, you know they were looking at 180 plus as a score, and that would have been
probably way too much for for Netherlands to try and chase down. Nevertheless, a really mature, measured innings from the young Bangladeshi opener, and of course contributed in a big way to inevitably a big win by them. 25 runs over the Netherlands today. We're off to a very short break here on Vantage Developers Presents Game on Hair. Still plenty more to unpack for this match, and of course looking ahead to the match that's just started as well. A very important clash which involves England versus Oman. Stick with us. जी वेलकम बैक टू वांटेज डेवलपर्स प्रेजेंट्स गेम ऑन है. हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स की. एक और इंटरेस्टिंग मैच कहेंगे बिकॉज बांग्लादेश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये मैच वो जीते, 2 पॉइंट्स और हासिल करें और अब वो एक स्टेप क्लोजर है टू द सुपर 8 एंड दैट्स व्हाट दे ऑलवेज वांटेड कि प्लान्ड अप्रोच के साथ जो है वो फेस करें नेदरलैंड्स को. बिकॉज रिमेंबर नेदरलैंड्स हर वर्ल्ड कप के अंदर एक प्लान के साथ वो भी आते हैं. दिस टाइम अराउंड थोड़े से रस्टी नज़र आ रहे हैं नेदरलैंड्स की टीम भी. जो उनके की प्लेयर्स हैं स्कॉट एडवर्ड्स इंक्लूडेड, थोड़ी डिफिकल्टी उनको हो रही है. मे बी इट्स द कंडीशंस, मे बी इट्स द वर्ल्ड कप प्रेशर, बट अ लॉट मोर प्लेयर्स आर अराउंड इन terms of the teams. You know, we have 20 teams competing, so it's not as straightforward anymore for Netherlands in this World Cup. But Bangladesh will be pleased because not only did they do well with the bat, maybe not as well as they were planning initially, लेकिन फिर भी ऐसा आपने इस तरह कहा फीस के like par total उन्होंने लगा दिया बोर्ड पे, enough for the bowlers to bowl at. But let's talk about Rishad Hussain and that spell. Another great discovery for Bangladesh. We've seen him here and there with the ball, लेकिन रिशाद हुसैन स्टार्ट उनका आइडियल नहीं रहा. 14 रन्स उनको पड़े उनके पहले ओवर में, बट उसके बाद जिस तरह उन्होंने ग्रिप शो की और जिस तरह स्पेशली दैट डबल विकेट ओवर एज वेल, हाउ क्रिटिकल वाज ही इन टुडेज गेम. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में. हमने देखा कि जो भी स्पिनर्स मिडिल ओवर में विकेट टेकर के तौर पर सामने आते हैं, जैम्पा की मिसाल ले लें, रिशाद की मिसाल ले लें, तो वो टीम जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं. आई थिंक उनकी मैनेजमेंट, बांग्लादेश की मैनेजमेंट की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया. क्योंकि हमें पहले अगर आप बांग्लादेश की क्रिकेट में देखें तो उनकी क्रिकेट के अंदर जो ऑफ स्पिनर थे वो आ रहे थे या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर वो खड़े थे शाकिब के ऊपर, लेकिन एक वैरायटी ऑफ लेग स्पिनर उनके पास नहीं था जो रिशद की सूरत में आए. ये स्पिन करते हैं, राइट एरिया में हिट करते हैं, और इन कंडीशन के अंदर आपको को बहुत बड़ा स्पिनर होने की ज़रूरत, आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू हिट इन अ राइट एरियाज एंड देन पिच विल डू द रेस्ट. तो अभी मुझे लगता है कि ये उनकी कम्बिनेशन को एक वो कमी जो इनकी जीत में हायल होती थी कि ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी लेस हो जाती थी मिडिल ओवर में, वो इन्हेंस हुई है रिशद के आने से. और जब रिशद ने जो परफॉर्म किया, आप देखें कि इनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, या अंडर पार रोक लिया या जीतने में कामयाबी के अंदर जो है अपना रोल प्ले किया. तो मुझे लगता है कि इसमें इनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की राइट प्लानिंग, और मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ही मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर द बांग्लादेश टीम. आई एम टॉकिंग अबाउट मुश्ताक अहमद, कि जब से वो इस टीम के साथ गए हैं इनकी स्पिन बॉलिंग की वो जो शार्पनेस है वो वापस आते नज़र आ रही है. And जो induction, you know, the induction of somebody like Rishad Hussain in these conditions, it speaks of the planning that Bangladesh have been doing for this World Cup. And of course, in contrast to, because we almost always link the spinner problem with Pakistan's challenges. It's interesting to note that, of course, Pakistan have been sort of unable to utilize their resources. We're talking about Abrar Ahmed or maybe Usama Mir, not having that plan as far as the conditions go. लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखना चाहिए. कोच नहीं रखना. देखिए अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ इसी कंडीशन में नहीं, इससे पहले भी एक मैच खेला उन्होंने जो कि न्यूयॉर्क में था, और अगेंस्ट किसके था जी, साउथ अफ्रीका. वहाँ भी जो सेकंड लास्ट ओवर किया उन्होंने, जाके डेविड मिलर को जिस तरह उन्होंने आउट किया था वहाँ पे, तो वो ऐसा लग रहा था कि 20 रन शायद और हो जाते, लेकिन वो जब वो लाए हैं उनको तो अमेजिंग था, उन्होंने आते ही आउट कर दिया. But their key spinner is not sitting on the bench. He is part of the 11, and I think that's what's making all the difference for Bangladesh. I mean, how crucial is it to have a good spinner in your ranks, as you say? Like when T20 cricket started, remember everyone thought it was going to be the death
of the spinner, right? Oh, you know, they're going to get absolutely hammered. Like, what are we going to do with our spinners? And then they innovate and they worked really hard and then they become the leading wicket takers in the history of the tournament, right? If you look at the top three, you've got the likes of Rashid Khan and Wanindu Hasaranga up the top. Yeah. Adam Zampa is there. Yeah, and now this guy. Yeah. And we know that wrist spinner always, you know, when they take wickets for you, especially that middle phase, you win the games because of their performances. And how lucky to have a talent like Mushtaq Ahmed in your dugout. I get to interview him quite a lot through PSL and I know what a wonderful coach he is, even with the Multan Sultans. So Bangladesh very lucky to have the incredible spin king in their ranks, giving them all of the advice. And with that, let's relive the wickets that did fall in the Netherlands' turn to chase because they got through the bulk of them. 134 for 8 is what they could manage. Starting from the beginning, Marty, Taskin, he's been so good with the new ball and strikes once again in his second over. Yeah, he did. It was really good bowling from him. That's a fantastic caught and bowled. That a little bit unlucky for Max O'Dowd there, hit it pretty nicely. Pretty key wicket that. Vikramjit Singh was looking to start to get going and Mahmudullah just slowed it up, put it a bit wider and got the reaped the rewards for it. And this is the period here where things started to go south for the Netherlands. 3 wickets in a space of 8 balls or so. Really good piece of bowling there from the leg spinner. Bringing Bastelator forward, off balance, and then a great piece of wicket keeping from Lytton Dust to whip the bails off so quickly to get that wicket. So just a key period there where Netherlands really will let themselves down and ended up that being the downfall. Yeah, it was a wonderful performance by them and a really measured, I suppose, performance by them with the butt and with the ball. Moving forward, if they do make it through to the Super 8, how much is this win going to encourage them? Because Bangladesh have had so many opportunities in ICC tournaments. They don't seem to perform well in ICC tournaments, but when you look at their team on paper, Yunus, there's so much talent within the ranks. There's so much experience as well. They've got a blend of youth too. So there's obviously a thought process in mind to not only look towards trying to do their best in competitions, but to look towards the future, which is why finding someone like Hussain is so exciting within their ranks, and obviously, you know, with that young opener as well, doing really well today. A lot of positive signs for Bangladesh. Could this be their year? These are conditions that suit them. And of course, the change in leadership also has really helped them, you know, get into this new direction. We have seen they have had problems, you know, as far as Shakib is concerned. He's a bit of a character. We have seen him, you know, in some scandal or the other, but what an integral match winner he has been for this team. And of course we saw that once again today, that there is no replacement for experience, especially in the T20 format. हम बहुत बात करते हैं youngsters की, लेकिन ऐसे matches में आपको वो आपका experienced match winner ही है जो गेम्स क्लोज करके देता है. एज वी सॉ टुडे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ऑन वांटेज डेवलपर्स प्रेजेंट्स गेम ऑन है, बट व्हेन वी कम बैक थोड़ा सा प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे अगले मैच के लिए, अफगानिस्तान टेकिंग ऑन पीएनजी. A very warm welcome back to Vantage Developers Presents Game on Hair. Of course, we're bringing you closer to all the glitz, the glamour, the action and the excitement of the T20 World Cup all the way over in America and, of course, the Caribbean. We've just seen a match finish between the Netherlands and Bangladesh. Bangladesh victorious by 25 runs. But there's another match to look forward to tomorrow morning, and also another one happening right now between Oman and England. You can watch that one right now on PTV Home, and of course it'll be on the sports of PTV Sports as soon as we're done today. But the match that we're about to chat about now is in the early hours of the morning, the one that you just saw on your screen. Of course, it is the last ditch hope for New Zealand. They are going to have all eyes on PNG, hoping for an upset at the Brian Lara Cricket Academy all the way over in Trinidad. It's Group C, Afghanistan taking on PNG. As I just mentioned, Roha, well, New Zealand, they've had a really tragic start to the tournament. It has to be said. They haven't won a game yet. Their only chance is somehow, if PNG
can get a win over Afghanistan. I mean, I wouldn't have thought so, but that doesn't mean much in this T20 World Cup because upsets happen all the time. Marty, is there a hope in heck that they can do this and give New Zealand another life? What do you reckon? We can all dream it can happen, can't we? I mean, the likelihood is, pretty low, but we can all dream. Well, Yeah. anything can happen in this World Cup, and if you're sitting with some Don't live in Pakistani a fans, dream, I'm telling you. Don't live in a dream. You can only hope for that, don't live in it. but yeah, anything can happen. We've seen how all of these associate teams have punched above their weight in this World Cup. और PNG की तरफ से भी हमने वो फाइट देखी है. बट हम अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यूनिस इनकी तरफ से हमेशा से इन T20s जो फॉर्मूला हमें नजर आया है वो यही है कि गो फॉर द बिग रन्स, put up a total and then scoreboard pressure के साथ आप squeeze out करें opposition को with the ball. But इस बार उनके क्विक्स ने भी जैसे responsibility ली है. It's not just the spinners. We've seen Fazal Haq Farooqi in the power play of course and in the deeper end of the game as well जब वो वापस आते हैं. How critical have Afghanistan been especially with their bowling in this World Cup? देखिए, एक तो उनको समझ में यह बात आ गई कि अब वो सिर्फ स्पिनर से मैचेस नहीं जीत सकते. जिस तरह उन्होंने इंडक्शन की है, फजल फारूकी की बात है, नवीन उल हक की बात कर लें, फिर उमर ज़ई की बात कर लें, तो देखिए ये आपके पास बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उनके पास अगर हम राशिद खान की बात करें, मुजीबुर रहमान की बात करें, तो ये तो थे पहले से ही. फिर नूर अहमद की बात करें तो ये क्वालिटी उनके पास पहले से मौजूद थी. फिर उनके बैटर्स में भी यही था कि अगर हम गुरबाज की बात करें, उसके बाद इब्राहिम की बात करें, तो ये तो था उनके पास. लेकिन फॉर समहाउ उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आप एक दो प्लेयर पे मैच नहीं जीत सकते जैसे पहले होता था. तो अब उन्होंने ये एक फार्मूला बना लिया है कि आपको रन्स भी करने हैं, उसके बाद फील्डिंग भी अच्छी करनी है, और जहाँ जहाँ आपके ऑलराउंडर्स काम आते हैं तो उनको भी अकॉर्डिंगली आपने यूज़ करना है. और उनकी जो एनर्जी है वो तो हम बहुत पहले से बात कर रहे थे कि उनके पास एनर्जी है, उनके पास ये T20 के एक्सपीरियंस भी बहुत है. लेकिन फॉर समहाउ वो एक इसको पार नहीं कर पाते थे. आज अब वो इस सिचुएशन पे आ गए कि हम ये देख रहे हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप जीत चले हैं. इस बिल्कुल चांस है उनके बिल्कुल पास. उनके पास चांस है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड नहीं रहती, पाकिस्तान नहीं रहती, तो और फिर इंग्लैंड भी नहीं रहती, तो किसी एक ऐसी टीम के लिए चांस है कि उनको सिर्फ ऑन द डे क्या करना है. अगर उनके सामने ऑस्ट्रेलिया है तो उसके खिलाफ जीतना है. फिर साउथ अफ्रीका का आपको पता है कि जब वो बिग स्टेज पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लैप्स कर जाते हैं. एक टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया है जिसको बीट करना है, चाहे वो सेमीफाइनल में होंगे या फाइनल में होंगे. तो आपको कुछ पता नहीं है कि ऑन द डे आपके बॉलर या कोई बैटर ऐसे आ जाए वो एक अमेजिंग इनिंग खेल दें. तो मेरे ख्याल से ये इनके पास चांस है. इसी तरह बांग्लादेश के पास भी ये चांस मौजूद है कि अगर वो आगे जाके क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा कोई ऐसी टीम ये वर्ल्ड कप ना जीत जाए जो आज तक कभी आई नहीं है और आज इस दफ़ा जीत जाए. तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मौका है. अगर दो तीन टीमें खास तौर पर पाकिस्तान नहीं रहती, उसके बाद इंग्लैंड नहीं रहती, ठीक है, न्यूजीलैंड नहीं रहती, क्योंकि ये बड़ा करते हैं, ये क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल, टॉप 4 में अच्छी टीमों को ये निकाल देते हैं. बेशक खुद नहीं जीतेंगे आगे जाके, लेकिन निकाल देते. तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा चांस है बांग्लादेश के लिए भी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के लिए. और मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि PNG के खिलाफ कोई ऐसा मैच खेलें जिससे उनकी रेपो नीचे आए और जिसकी वजह से कोई ऐसी टीम आ जाए जो कि नहीं आनी चाहिए. बिल्कुल, और बहुत करीब है अफगानिस्तान भी टुवर्ड्स दैट ड्रीम. जैसे यूनिस ने कहा कि वी माइट सी अ न्यू टीम लिफ्ट द वर्ल्ड कप. It's a very real possibility. Afghanistan have that perfect balance इस पूरे वर्ल्ड कप में with their batting, with their all-rounders, with their spinners, with their fast bowlers. एक इंटरेस्टिंग मैच है PNG के अगेंस्ट भी, बट इनके अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ भी बहुत एक्साइटिंग मैच होना है. बट अ लॉट राइज ऑन हाउ अफगानिस्तान प्ले टुमारो, बिकॉज वही मोमेंटम की बात है कि अगर ये थ्रू कर जाते हैं तो ऑफ कोर्स वी विल सी अफगानिस्तान गोइंग फॉरवर्ड. देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि अब तक की जितनी परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं, दो टीम सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आ रही हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड जोन में नज़र आ रही हैं, जिनमें सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं. एक अफगानिस्तान और दूसरी ऑस्ट्रेलिया. तो अगर इन दोनों टीमों को हम देखें तो इनका राइट प्रोसेस है. इनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, इनकी स्पिन बॉलिंग काम जो है वो कर रही है, और इनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो डिलीवर कर रही है. तो जब ये तीनों चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं तो आपका जीतना थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाती है. तो मुझे लगता है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम एक ऐसा यूनिट बना हुआ है जिसको कंडीशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और उनका बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज दे नो दे प्लेइंग इन अ कंडीशन वेयर दे कैन परफॉर्म बेटर and their percentage of success is higher. So why not to have that confidence? Obviously we're playing well, and why not to have a confidence that we're playing in West Indies, which will offer a lot of opportunity to all of our players to go and perform well.
and they must be on a high confidence at the moment. So I don't think so. There should be anything should stop them until unless they get complacent, which I think it's not the case at the moment, because the last World Cup they played fantastically well as a team. They were out of the tournament only because of a one game which could have been won by them, but what a game Maxwell played a fantastic in that one. So I think at the moment they are cruising, and they're cruising for a right reason, because they brought the right combination into this tournament, right confidence into this tournament, and the condition is offering them all the right ingredients to win this tournament, to go further in this because tournament. I have another follow-up question on Afghanistan's success. Is it also because they haven't been playing a lot of cricket at home, so they get to play across? Exactly. So they play all over the world, and that's because of that they can adapt to any conditions, and all of their facets are pretty well balanced. देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताऊं. एक तो their exposure to play around the world as a T20 pros, number one. The hunger to do well at that level. This unit basically have a great hunger within themselves that we should be the someone emerging nation, and we should have this tag, rather than one of the team के जिसको कोई भी जाएगा और जीत जाएगा. तो अभी आप देखें उनका जो ग्रोथ है वो राइट वे में, उनकी जो प्लेयर की बॉन्डिंग है वो बड़ी राइट वे में एड्रेस की गई है. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग इनटू इट. बाय द टाइम जोनाथन ट्रॉट took a charge as a coach, he brought that energy into the team. He fixed those issues which were not addressed before, like bringing a fast bowler into the team, and also Umar Gul was that time when he was there, and then he make sure that that we need to have a good fast bowling unit also to win matches in different conditions. So I think Jonathan Trott, as a mindset, he's doing a fantastic job for the Afghanistan team. Took the words right out of my mouth. I think the inception of him coming into the side, we saw them have success in the 50 over World Cup just last year. What those wins did. I love those little videos you see on ICC, a little fly in the wall of inside the team room, and the way he speaks to them, the feeling that he garners within the group. It's so inspiring, even just as a fan of the game watching. And I loved a moment when he said to Muhammad Nabi, how long have you played for Afghanistan? 24 years. And have you ever beaten New Zealand? No. And just that was the drive, that was the motivation. It's to get better, it's to challenge these big sides, and Afghanistan is no longer an associate nation. I had them in my top 4 from day dot. So I think maybe a little bit of Marty Oracle's rubbing off on me at the moment. And seeing how well they've done, I think they are well and truly a threat in this competition, and it's a real wake-up call for such a strong side as New Zealand that, World Cups are ruthless. You lose a couple of games, you're out, and it's all about momentum in this format of the game, and it just opens up a really interesting Super 8 now, to think that for the first time in such a long time, we probably won't be seeing the Kiwis. I'm not saying anything until the game that starts at 5:30 a.m, of course, in just a few hours gets underway, but the action is just hotting up here in the ICC T20 World Cup. It's almost time for the end of our show, but don't worry, I'm not going to let you go anywhere without announcing our J. Junaid Jamshed winner perfume, thanks to our friends at J. And I can now reveal that the winner for today is, drumroll please, Roha. Guys. Our winner is Hamza. Congratulations. You answered that question correctly. Who was the coach of the England cricket team during the 2022 ICC T20 World Cup? You're getting all rounded by Shoaib Malik and, of course, J. sent all the way to your home. Congratulations. What a perfume. This is fancy. This is real. Look at that. Oh, beautiful. Congratulations, Hamza. Stunning. And thank you so much for engaging with the show and calling us, texting us, following us on social media. बहुत शुक्रिया आपका, and आप सब भी बहुत सारे prizes जीत सकते हैं. If you keep watching our show, we're giving away lots every single day. We absolutely are, but don't worry, the action is not ending here on PTV Sports. We are going right to the game that's happening at the moment. It's so important in the context of if the defending champions could sneak into the Super 8, it's England taking on Oman in Antigua. That's all from us now, though. Gentlemen, thank you so much for your time. Roha, incredible work as always. And we're going straight to live action on the other side of this. So thanks for joining us on Vantage Developers Presents Game on Hair, and the match continues right now.